Welcome, Madhav. Hello, namaste, sir. I hope Well, I'm. yes. Welcome, Madhav. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you. No, thank you very much for agreeing to our request. And we are looking forward to your guidance to all the aspirants who are going to join. We'll give them another 1 or 2 minutes. They are just joining. Sure, sure, sir. So you are at your home? Yes, sir. I'm in Gwalior, sir. Yes. Gwalior. So when are you joining? 21st? I heard this 21st is the date this time. Yeah, it is starting on Monday, 25th August, sir. Yeah. Um, But they they have have asked, called. I think, to join few days ago, isn't? Yeah. 20th and 21st, they have told us. Okay. So why they want 3 4 days ago? What is the reason? Sir, we are not able to decipher as of now. And Oh, because we have to take technical resignation from IPS and go to Hyderabad and come, so we are partly also requesting them to uh, allow us to join on 23rd. okay. So all So this. do you need a technical resignation? I think it doesn't require technical resignation if you join from one civil service to another. I'm not sure about that because generally you say that you have got into this and they allow you, they permit. Sir, some sort of I technical don't think there is a formality need to to happen. resign. Okay, Uh, maybe new procedure. yes, sir. Sir, what is generally the nature of this crowd? What they are basically, I don't think we have around 20 people who are appearing this year, but I don't think many of them will join because they Yeah. must be in last, preparation. Then we have other who are going to appear next year or next to next year. So the crowd is basically who are going to appear in next 2 years in the civil service exam. They might have appeared this year also, many of them, and maybe that they could not clear it. So all of them are serious aspirants for civil services. That's why we keep it's a closed group, and so you will make a presentation and then we'll open it for question answer, and that is the most important because they get one to one time to discuss, and Yeah, yeah. there is no better person than you for No, this. no, I love to help. Um, Yeah. there is also some kind of validation toppers enjoy, sir. They want to hear the same thing sometime from us and they feel, acha, okay, now we'll do it. So, No, they are in serious study, so they want to know what difficulties, and so I yeah, think now we have a good number, and rest will join in few minutes, so we can formally start. Okay, I will start it. Good evening to everyone. I'm very happy to introduce Mr. Madhav Agarwal, who secured 16th rank in 2024 exam and going to join Missouri on 23rd of this month to be in IAS. He's presently in IPS and he's also a chartered accountant. So we are really thankful to him to agree to our request. And I'm sure that there is no better person than him to guide you about the civil services preparation because it was not his first time. He has seen the civil services. He has got into IPS. He has got into IAS. So he has gone through all the cycles. So that way he's the best person. So I would request now Shwetaji to formally welcome him, and then we'll start today's session. Shwetaji. Good evening, everyone. It's my privilege to introduce our next mentor, Mr. Madhav Agarwal, who has secured Air 16 in UPSC CSE 2024. He is a chartered accountant by profession and was already serving as an IPS officer before cracking this exam with a top rank. He has cleared the exam in his fifth attempt, showing incredible perseverance and consistency. Today, he will be guiding us on GS main preparation, drawing from his own experience of scoring 463 marks in the mains, one of the highest scored this year. Please make the most at this session, ask your doubt, note down key strategies, and get inspired. Thank you so much, sir. thank you. Thank you. Thank you. Yes, Madhav. Now the floor is open to you. Sure, sure. We have 22. So three of us. So we have no 23. So we have 20 aspirants, and few more will join.
Okay. Uh, Sir, so basically, I've planned my session in three parts. And in the Mhm. beginning, the two parts that I want to discuss mainly, they cater around how to make your mains notes. And second is Mhm. how do you integrate the assets that you read into your notes. So I think these are the Right. primary issues which generally everybody faces. And if you could tackle this very early in your preparation, uh, you'll be on a very safe side because uh, in my first attempt when I failed prelims, I failed it by Mhm. 0.6 marks. I think the best Mhm. time to fail in this exam is prelims itself because with Mhm. that you get a lot of time to improve yourself. You look back at your preparation and then make you guide and strategize again. But in Mhm. terms of when I failed it my first attempt, I used that time with my friend to make my own notes. So in Mhm. 21 itself, I made my notes. And those were the same notes with little updation that I used in my final attempt also. So Mhm. I think that strategy I want to share with you. So the notes that you make in main Mhm. actually, they have to basically answer two major aspects. So Mhm. you see the UPSC syllabus. Mhm. So you'll see UPSC has given specific terms in the syllabus after Mhm. talking about a certain aspect. For example, if we see the example of food processing industries. So food processing industries comes in GS3. It comes under the economics and Yes. agriculture section. And when we see the food processing industries, we see there are upstream, downstream linkages, challenges, etc. So these are the some key terms that have been already written in the syllabus very clearly. So tomorrow, if Mhm. UPSC suddenly asks what is the scope of, say, FPI industries in India, we should not be very amazed because that question is directly coming from the syllabus. So your notes should answer every keyword of the syllabus. That should be the main aspect. Let me unmute And others. second, Yeah, all our others are unmuted. Yeah, it's okay. yes, sir. Yeah, please continue. Yeah. So our notes must answer every keyword of the UPSC syllabus. So our aim should be that we have some material to write upon with that keyword if a question comes about. And second aspect is because not everything can be deciphered from the UPSC syllabus itself. So in art and culture, the syllabus will be, say, Indian art, architecture, and culture. So now it is very difficult to decipher what UPSC can ask from this. So for that, you go to the UPSC PYQ questions, the past year questions that UPSC has asked already. Now what happens in the market is you will get easily PDFs where the questions from the UPSC mains papers GS 1, 2, 3, 4 have been categorized syllabus wise. So Mhm. if GS2 judiciary is the topic, judiciary में past 10 years में from 2013 onwards, UPSC has asked say these 10 kind of questions. Okay. Mhm. So now you have two things. You have judiciary, the keywords which have been written, say structure, functions, extent. I'm just taking an example. And again, within the judiciary, now you know UPSC in the past has asked, say, question on contempt. UPSC has asked the question on women in judiciary. UPSC has asked the question on, say, All India Judiciary Services. UPSC has asked question on something else related to judiciary. So now you have these two things in mind. So your notes should answer the main themes which the UPSC is asking in PYQs, as well as the keywords that are there in the UPSC syllabus. So this should be a primary objective to make your base notes. If these base notes are ready, I think you will be better capable of writing any test or writing daily answers for your mains. Without this, you'll always feel some kind of anxiety that I do not have this content. I do not have the necessary uh, weapons in my armory to answer the question. So I think this base preparation is very necessary. So once this base preparation is necessary, and of course, some general things you'll cover
with the topic. For example, when you're talking about food processing industries, you'll develop some 2, 3 introductions which revolve around the food processing industry, some 2, 3 kind of conclusions which you may come across while reading model answers or current affairs. So once this base preparation is done for your GS mains notes, now we'll talk about how do we integrate our the current affairs into these notes. Okay, so whenever we are reading newspapers, our objective should be very clear. This we are reading newspaper, any magazine, any current affairs source, whatever you're reading, even if you're watching any YouTube video, our objective should be very clear. Whatever I'm reading or listening, how can I use this content in my answer? We have to be very clear with this objective. We are not here to boost our knowledge to an extent which is not required in the exam. We should be very mindful that we need only that much that I can use it in my answers. So we should only eat that much. So now if you read an editorial on food processing industries in future, okay, there's an editorial or some news which has come. You'll see that editorial may cover some good introduction. It may have some good conclusion. That editorial may talk about the challenges that the food processing industries is facing. It may talk about the significance of FPI in India, or it may be talking about some specific government scheme which has been introduced newly. So now you should have that lens. Acha, challenges, I already have say 10 challenges in my notes, which is my base notes which I prepared. Now, is there some very good 2, 3 challenges, 2 points that I can really add to my notes? If that is the case, then only you should pick those specific 2 challenges and put them and write them into your notes. And the rest of the editorial is of no use to you now. And you'll stick to your own notes. That will become your one source of preparation and one source of revision. You'll not take up that magazine again. You'll not take up that newspaper again to revise. So you should only pick up that. And at a point that will come in your preparation where you'll see that I have enough content on food processing industries. I no longer need to read any other article or news article or magazine content for this because I have sufficient content with me to answer any 2-pager or 3-pager which comes on food processing industries. So this should be your approach for integrating current affairs. So you should be very mindful of what amount of content that you're picking up. From the whole editorial of say 2 pages, if you like only one line, just pick up that one line. If you think that you're not able to write that line in your answers, ignore it, even if it is very good. You think that you'll not be able to replicate it in the exam, it is of no use to you. So just be mindful. And of course, now that you have prepared your notes syllabus wise, thematically, you'll be easily be able to relate any current affairs topic to the specific GS mains notes. So you'll see, acha, this topic can come in FPI. This topic can also come in the government scheme's failure. So suppose, for example, it is talking about a food processing industry scheme which has failed. So this topic can directly come in the FPI topic, of course, but this can also come in the governance schemes if you are talking about in the GS2 governance section. So why some schemes are failing if the question comes about like this? So what is the reason for the failure of sub schemes? So it may be they are not sufficiently decentralized. They are not planned adequately. And there you can give this example of say XYZ food processing industry scheme. So you should be mindful ki acha, this is a topic is worth only an example for my GS2, but it might come as a full topic in GS3. So this way you will be able to integrate current affairs into your notes as well as make your base notes. No, so now the good part is ki, I have digitalized all my GS mains notes, which are prepared syllabus wise, which have introduction, conclusions. If time and the technical aspect allows, I can show them to you how I have made those notes. We have added the PYQs, me and my friend, uh, and we have added each topic properly categorized digitally. You can use those PDFs to make your own notes, or if you want to revise from them, you can read from them. If there is some gap in your notes that you think that can be bridged from our notes, you can pick that section and ignore our notes. So I think that could be a good reference material for you. And I'll share that link
with sir and also on this Zoom meeting at the end. So these are the main how to make your notes we have understood. And second is how to link current affairs from your notes. You can read newspapers. In the initial preparation, I used to take 2.5 hours to read newspaper because we don't have a proper background around what is happening. But as soon as we are done with our basic reading, we are done with our classes, we start to understand newspaper very better. And ultimately, you'll take only 25 to 30 minutes and you'll understand what articles to read, what articles not to read. Uh, Sometimes in current affairs integration, what happens is you end up uh, basically increasing the size of your notes too much because every day you're reading newspaper and you're trying to link, Acha, this topic will come in FP, I'll put it, this will come in governance. So your notes will become very bulky. So to avoid this, what I used to do is on Telegram, I used to make my own channel where only I was there. So I used to write there, Acha, this is the good line I read about secularism, GS1. So I used to write GS1 secularism and add that line over there. So I was not directly adding everyday current affairs to my notes because what happens with current affairs is, so if you're reading current affairs today, there are high chances that that current contemporary line that you have read might lose its significance when you're giving your exam next year. So this was my way of avoiding my notes to become very bulky. So you can either use Google Docs, you can either use Telegram, whatever you're comfortable with, rather than directly writing it there. And the next time when you're giving mains, you can, after you have read your basic documents, you just quickly scroll through that and you'll see, Acha, this topic is not no longer relevant. This is relevant. This is relevant. Because in IR also sometimes situations change very drastically. If we are in a very good relation phase in our country this year, maybe next year it might change very drastically. So you have to be very mindful of not making your notes very bulky. So after discussing these two aspects, I have now some general points that I think will be very helpful for your mains preparation. I think uh, I have learned this from my experience and the mistakes that I have made. So, and after this part, I like to, the general statements, I like to give some specific pointers for GS 1, 2, 3, 4, what you should be keep in your mind to increase your marks. So some general points that I want to give to you is, of course, that one of the main point was make your own notes. So when you make your own notes, that process itself is a very good learning. So when I made my own notes, I could decipher the UPSC themes. I could decipher. Madhav, one query which I have been getting from aspirants is when you make your own notes, whether we should integrate the notes of prelims and mains, and whether we should have them handwritten or digital. So, if you can clarify at this juncture, we don't generally go for question answer at this juncture. I'm asking these two questions. We'll keep the question answers later for rest of. Sir, prelims, sir, I had no very specific notes. For mains, I had this mains content properly, which were single PDFs for each subject. And those were my one source notes for that topic. So when I'm reading, say, polity and constitution, I will not open any other standard book. I had to ensure that I have all the content in this PDF itself. So for mains, I made very proper structured notes. For prelims, it was very thematic basis that I had to make notes. For example, if I'm preparing for geography, UPSC is asking, say, questions on soils. UPSC is asking, say, question on rivers. So if that aspect is not very properly covered in my standard books or in my class notes, I'll make a separate notes for that section. So soils, UPSC is asking what are the nutrients in different soil, which soil is found where, what is the other names of this soil. So I'll make a small table, one pager. That itself will be my note for prelims. And So you will have separate notes for prelims yeah, and separate notes for yeah. mains. Okay. Mostly, and Because you have appeared 5 times, so nobody could be better than you to guide. yeah. Okay. Okay. Yes. It was my approach, sir, and I usually try to make notes Digital. digitally whenever Okay. it was possible because it is easier. It is easier to search and update, sir. That was the main motive. Because if you're writing some, say you are making notes out of prelims tests
that you have given. So whenever you give a 2-hour test, post that there is a model answer of those 100 questions. If you are learning something from that, I used to copy that in my digital section only. It used to save me time also. And next time, if I'm making another mistake on, say, the section of governor, I just used to search governor and add my new learning there itself. So the points of governor were coming together. So that was also one advantage with digital notes, sir. And you can read them anywhere. It is accessible. Uh, so I found it much better, sir. Yeah, But sorry for interruption. Now you continue. no issue, sir. Uh, but at the same moment, sir, if something required handwritten notes, I did not shy away from making that as well, sir. So, for example, I'm making very short notes. Uh, Short note is also one query, sir, I would like to address. So, if you have made your main notes, say they'll be, say, society, maybe 100 pages notes might be there. But those 100 pages you cannot revise at the end of uh, your cycle when you're giving mains. So you'll make some kind of short notes. So those short notes are very, I would say, very personal and specific to you. So if you're reading, say, secularism and communalism section in GS1, you have revised it already, say, 1 or 2 times. And now in your final revision, you have just your pen and paper on your side. You have written secularism, and then you have read it and you thought, Achha, these are 1 or 3 key points that I am really forgetting, and I can bring them in my answers, which will boost my marks. So I'll just scribble them on a piece of paper. Achha, these are the key. This is the introduction that I'll write. अच्छा, this is the diagram I want to integrate. So उस टाइप का, और इसके आगे मैं ये डायग्राम बनाऊंगा. That itself is a short notes. तो बहुत ज्यादा अपने को अलग से मेहनत नहीं करनी शॉर्ट नोट्स की. जब भी आप फाइनल रिवीजन कर रहे हैं या फिर सेकंड रिवीजन में है, तो आप पेन एंड पेपर साइड में रखिए. जो जो आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं उनको आप लिखते जाइए, तो वो आपके शॉर्ट नोट बन जाएंगे और उन्हीं को आप रिवाइज कर पाएंगे. तो सर, थोड़ा सा जनरल चीजें जो मैं मेंस के लिए बताना चाहूंगा. एक सर, बहुत सब लोग गलती क्या करते हैं, सब लोग आंसर राइटिंग करते हैं. एवरीबडी इज राइटिंग आंसर्स बिकॉज दे नो दे हैव टू राइट आंसर्स टू क्लियर मेंस, बट दे आर जस्ट रिपीटिंग their mistakes rather than improving. So everybody is in a repetition phase of writing answers. Achha, I've written answers today, I'll write tomorrow, without reflecting what you are doing wrong in these answers. So what my suggestion is, usually because of lack of time, uh, aspirants do not read the model answers of the questions that they have written. So if you are writing a test of the 20 questions, when you get it evaluated, you sit with your evaluated copy, model answers of that test, and the third should be, if it is available, the topper copy of that test series, the test that you have given. So if you take any test series from the market, you will find they upload the good copies that have been evaluated with good marks for that test. So you sit with these 3 things. You take 3-4 hours, invest your time, and identify 5-6 pointers that you will improve in your next test of that subject. So when you'll compare your copy with topper copy, you'll compare your top copy with the model answer, you'll find gaps. Acha, most of the time when you read topper copy, you'll see, यार ये तो मुझे भी आता है. I can understand this. This is very basic thing that he has written. But the only difference is that he had, or she had, thought of that thing at that moment and replicated it in the answers. So I used to make my frameworks. I used to find hidden dimensions that I was not thinking of from these aspects, and then improve it in my next paper. So this is very important for you to do, to keep on improving rather than uh, uh, just repeating your in mains is, sir, you can brainstorm rather than writing a lot of tests. So writing practice will go at a different pace. You're writing your tests, you're writing daily answers, that is okay. But if you can just sit with the model answer, you can buy it from the market. Any Xerox shop in Delhi will give you. You just take any question paper from this year, last year. Most of the topics are static. So geography paper, even if you pick it from 2021, 2022, it won't matter because those are static portions. So you pick up those tests. Out of 20, you will identify, say, 5-6 questions that are unique from that test, and you take half the time.
जैसे आप 10 मार्क को लिखते हो उसमें आप 7 मिनट ले रहे हो. So you take 3.5 minutes per question and quickly brainstorm. अच्छा, for introduction, I'll write this 2-3 keywords. Body, अच्छा, this will be the body one, this will be the body two. Body two will have these 3-4 keywords. Body two will have these 3-4 keywords. This is how I'll conclude my answers. This is the way forward that I'll try. This is the diagram that I can make in this question. So you are just brainstorming very quickly in half the time to create a pressure on you to basically bring out good points, bring out very good keywords in your answer. So this will benefit in two ways. First, it will help you in revision also. So you're constantly attempting tests, you're brainstorming, your mind will always be in a working mode. You're again looking at the model answers, you'll identify your own gaps. And second aspect is this will also help you in faster completion of papers. जितना ज्यादा अपन ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, अपने नेक्स्ट टाइम जब आप आंसर लिखोगे उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम एक पॉइंटर मैं देना चाहूंगा आप लोगों को. जैसे मैंने एक ड्यूरिंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज ही मैंने डेवलप किया था, एक एबीसीडी फ्रेमवर्क मैंने डेवलप किया था. सो एबीसीडी फ्रेमवर्क वाज समथिंग दैट आई हैड टू डू दिस व्हेनेवर आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन. सो ए स्टूड फॉर कि इस क्वेश्चन में मैं क्या अलग कर सकता हूँ, मैं क्या डिफरेंट इसमें कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या एक्स फैक्टर लेके आ सकता हूँ. सो वेन एवर यू आर ओपनिंग, आई वॉज रीडिंग अ क्वेश्चन मीन्स आई यूज्ड टू थिंक कि इसमें कुछ अलग कर सकता हूँ क्या, मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ विच नोबडी एल्स माइट नॉट बी डूइंग. फिर बी वॉज what kind of best practices I can bring into this answer. So if you're talking about, say, पीडीएस सिस्टम, तो पीडीएस सिस्टम की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या? हाँ है भाई, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, ये है, दिल्ली में है. दे आर गिविंग द राशन एट डोर स्टेप. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, बट जैसे बेस्ट प्रैक्टिस आप सोचोगे कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है क्या, तो ऑटोमेटिकली आप उसको बॉक्स बना के अपने आंसर्स में, एग्जाम्पल्स में, कंक्लूजन में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. सी वॉज विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को उस टॉपिक का करंट अफेयर्स पता होता है, बट क्योंकि अपन एक्टिवली सोच नहीं रहे होते हैं कि इसका मुझे करंट अफेयर्स लिखना है, वो एग्जैक्टली उस टाइम उतरता नहीं. अब पीडीएस में आपने कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा हो कि यार कुछ राशन का लीकेज आपने कोई सिटी में पढ़ा हो, या फिर कोई गुड इनिशिएटिव पढ़ा हो, या फिर पीडीएस रिलेटेड आपने कुछ सक्सेसफुल स्कीम पढ़ी हो गवर्नमेंट की जो भी मार्केट में आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ लिख सकते हो. और डी हो गया कुछ एडिशनल डायग्राम डायमेंशन आप एग्जाम में उस क्वेश्चन में ला सकते हो क्या. सो थोड़ा सा अगर आप इस पे एफर्ट डालते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट होता है दूसरे लोगों से. तो एबीसीडी में आप इसको चीज को ध्यान रख सकते हैं. नेक्स्ट सर, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंटर्स मैं जो देना चाहूँगा. सो जीएस 1 में मेजरली जैसे आर्ट एंड कल्चर आप देखेंगे, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शंस हैं. तो इसमें जैसे आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं अपनी, उसके बाद अगर आप कोई भी मार्केट से 3-4 पेपर्स उठाते हैं और उनको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा वैल्यू एडिशन आता है सर सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में. अगर आप वो बुक को वापस पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा आप नहीं सीखेंगे जितना आप कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से सीखते हैं. बट पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके लिखना, फिर उसको चेक करना, फिर उसका फीडबैक लेना बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो उस सेंस में अगर आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं पेन पेपर लेके, तो आपका दिमाग भी चलता है, आप कुछ नई नई चीज़ें भी सीखते हैं, और आपका रिविजन भी होता है. तो स्टैटिक एरियाज में ये बहुत अच्छा अप्रोच मुझे लगता है. फिर ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में भी अगेन स्टैटिक अप्रोच है. तो आप जब अपने बेसिक नोट्स आप पढ़ लेते हो, आप पीवाईक्यू के थीम्स आपने कवर कर लिए हैं, उसके बाद जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आप नई नई चीजें भी सीखते हो, और रैंडम क्वेश्चंस को हैंडल करने की एबिलिटी भी आपके अंदर आती है कि यार ये रैंडम क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आ गया, तो मैं इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ. अगर कुछ मेरे अंदर कुछ फ्रेमवर्क है क्या, मैंने डिसाइड कर रखा है. और ज्योग्राफी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन ज्योग्राफी इन GS1 इज because out of 250, 100 marks questions will be from geography section. 75 marks will come from society, 75-80, and the rest 75 will come from all this art and culture, world history, modern history, post independence.
सो ज्योग्राफी इज बेसिकली इक्वल टू वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री कंबाइंड। सो उसमें उतना ज़्यादा एफर्ट भी देना ज़रूरी है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो, और उसके बाद आप अपने डायग्राम्स, जितना अच्छे आप डायग्राम्स लेके आ पाएंगे ज्योग्राफी में, जितने छोटे छोटे माइक्रो डायग्राम्स भी अगर आप लेके आ सकते हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। जैसे आप प्लेट्स का मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो आपने एक वर्ल्ड मैप बना दिया जिसमें डिफरेंट प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपने दिखाई, बट आपने छोटे छोटे प्लेट्स के डायग्राम बनाया, अच्छा यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पे ट्रांसेंड हो रही है, उस तरीके से आपने इफेक्ट उसको दिखाया, तो माइक्रो डायग्राम्स हेल्प करते हैं। सोसाइटी में सर जनरली कोई क्वेश्चन बहुत जेनरिक आता है, फॉर एग्जांपल हाउ इज say I think no answer on this question will be wrong, but the requirement is कि आप कितना broad इसमें हो सकते हैं ऊपर से। तो इसमें आप institutions को ध्यान में रखिए, अगर आपको जैसे generic question आंसर कर रहे हैं, तो जैसे institutions क्या क्या हो गए, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन हो गया, मीडिया एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, नॉलेज सिस्टम, एजुकेशन अपन कैसे गेन कर रहे हैं, फैमिली, कास्ट, ये सब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे सोसाइटी बनती है। तो अगर आप एक पॉइंट देखेंगे, अच्छा कास्ट कैसे इम्पैक्ट हो रही है, फैमिली कैसे इम्पैक्ट हो रही है, मैरिज कैसे इम्पैक्ट हो रही है डिजिटलाइजेशन से, नॉलेज सिस्टम कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, आई थिंक आपका आंसर बहुत डाइवर्स हो जाएगा और बहुत बेटर लगेगा उस केस में। तो GS1 में आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि किस तरीके से आप स्टैटिक पोर्शन को ब्रेनस्टॉर्म करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर GS2 में मेजर एरियाज आर पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन सर। सो पॉलिटी में सर JAC, आई थिंक दिस इज द कीवर्ड। आपको हर आंसर में जितना पॉसिबल है आपको जजमेंट्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। A से आर्टिकल्स, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे, और C से उस स्पेसिफिक एरिया का कुछ कमिटीज है या फिर कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप ला सकते हैं, तो उसको आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको केस लॉस पे थोड़ा एडिशनल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जैसे आपको केस लॉस को अ, आपको बेसिकली रिवर्स लर्निंग करनी पड़ेगी। जैसे यूजुअली अपन केस लॉस पढ़ते हैं कि अच्छा इस केस लॉ में क्या हुआ था, इस केस लॉ में क्या हुआ था, वो ठीक है, बट यूपीएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऑन गवर्नर। अब आपको रिवर्स याद होना चाहिए कि गवर्नर पे आप 3-4 केस लॉस कौन से याद है। क्वेश्चन माइट कम, व्हाट आर द केस लॉज रिलेटेड टू वुमेन, तो आपके दिमाग में रिवर्स प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छा वुमेन पे आएगा तो मैं 4-5 केस लॉज लिखूंगा। एक बार क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 21 रिलेटेड, तो आर्टिकल 21 रिलेटेड केस लॉज क्या क्या होंगे उसको आप देखिए। फिर कंट्री वाइज आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, कुछ गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि अच्छा पार्लियामेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, या फिर पार्लियामेंट को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होती है, या फिर ब्रिटेन में देयर इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट कि हर बिल को एक कमिटी स्क्रूटनाइज करती है। तो इस तरीके के सजेशंस अपन दे सकते हैं कि ये कंट्री में फॉलो होता है, तो इसको अपन कुछ बेसिस पे अपन यहाँ पे भी ला सकते हैं। सर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में मेजर एस्पेक्ट जो डिफरेंशिएट कर सकता है कि आप थोड़ा से बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने उसमें लेके आ सकते हैं। जैसे ई गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस कहाँ कहाँ पे अच्छा आपको एग्जाम्पल है उसको आप डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। सोशल जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कुछ अच्छी स्कीम है, कुछ अच्छा इनिशिएटिव है जो वर्क कर रहा है, हंगर को हटाने के लिए किसी ने अच्छा कोई कलेक्टर ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कुछ लाएंगे तो थोड़ा सा आपका आंसर हटके डिफरेंशिएट होता है इसमें। सर IR के लिए भी सर मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था विच वाज, IR में सर क्या होता है, बहुत चीजें अपने दिमाग में रहती हैं, बट थोड़ा सा डाइवर्स आंसर लिखने के लिए सर मैंने एक ABCDEFG करके ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था। A वॉज फॉर कि विद दैट कंट्री इफ आई एम थिंकिंग, इंडिया वर्सेस इंडिया विद दैट कंट्री, सो इंडिया से एंड इसराइल। सो इंडिया एंड इसराइल का A से था वॉज एग्रीकल्चर, आर देयर सम एग्रीकल्चर लिंकेजेस बिटवीन द टू कंट्रीज, और आर देयर सम P2P ties with the two countries. B was border. Are we sharing some border with that country? Is there some good relations or some conflicts on that area? C would be culture connectivity.
and some common challenges with both the countries might be facing. D again, defense. E से sir energy, economy. F say what is our foreign policy approach with that country. So with Israel, it is de-hyphenization of our relation with Israel and Palestine. G say, is there some global grouping in which that country and we are having relation? For example, in Israel, I2, U2 is a new body you can talk about in your answers. So when you have such kind of small frameworks, your thinking ability really improves in the answers. So now going on to GS3, I think this is one of the areas where people are scoring very low marks, below 100, below 80, 70s. I think this is generally a trend. And one of the main reason is I think GS3 has become very uh, demanding in terms of two things, content heavy and data heavy. So all your answers have to be very dense. You have to write more points in GS3 especially, uh, and also that will increase the density, and you also have to plug in a lot of data. So for that you have to focus on reading some data compilation, revising them, and ensuring that you're using it in your answers, in economics, in agriculture, in science and tech, environment, wherever it is possible. And GS3 is a subject which I used to really enjoy while writing, because it comprises of 6 subjects: economy, agriculture, science and tech, environment, disaster management. And every two question, basically the subject is changing. So it is very enjoyable to write. But that also demands that your answer should look very specific to that nature of the question which is asked. For example, when you're writing a economics question, agriculture question, it should look like an economics answer. So for that, you might have to make some pie charts, you might have to make some graphs, and those are not very difficult to make. Those are made from the content that you already have. You don't have to go into the economic survey to search for graphs. You make a very basic graph. Acha, in 2014, this was a situation. In 2024, this is a situation. Very simply, you can make any bar diagram, any line. You can compare the figures from 1991 to now. You can compare the figures from 1947, 1991, and then what is the state now. So with these figures, your answer will really look like that subject specific content. When you're talking about disaster management. So in disaster management, you can talk about this disaster is affecting in these areas, and some diagram which is very specific to that disaster. So if you're talking about cyclone, you can make a diagram of cyclone. If you're talking about flood prevention, you can make a diagram which is showing house made at an elevated land. So that will show how you're ensuring flood prevention. So I think this is it for GS 1, 2, 3. For GS4, uh, I think GS4 is a area where you can really score good marks. And for this, one of the key suggestions that I think would be to uh, not really focus on dumping more and more examples. I think there was an era where dumping more and more examples was giving marks. But now the demand of the paper is to generate different arguments, and then that argument should be supplemented with the example. So if so there should be some content, should essence, some essence in your answer which is there, and the example should supplement it rather than just dumping example. Achha, if you're talking about hard work or success, you say MS Dhoni, ye, wo, ye, and you're dumping examples. But you should build the theme, you should write an argument. Achha, and then the example is MS Dhoni. So आपको उस वे से उसको ध्यान रखना चाहिए. केस स्टडी में आप कुछ फ्रेमवर्क्स देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन आप करंट के बेसिस पे कर सकते हैं, उस टॉपिक की थीम पे पकड़ के कर सकते हैं, कुछ उसमें एथिकल डिलेमा है उसको आंसर कर सकते हैं, उसको बेसिस रख के आप कर सकते हैं. दिस कुड बी सम आइडियाज जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. एथिक्स में कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो 3 कोड बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उन कोड बेस्ड क्वेश्चंस को आप एज अ मिनी ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि
जो भी ऐसे टॉपिक्स भी अपने को आते हैं उनमें यूजुअली कोड से आते हैं, तो जब आप उनको डिसाइफर करते हैं वहां पे, उसी तरीके से इसको डिसाइफर करना है और अपने को फटाफट उसमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव लिखना है. So I think, sir, these are the major areas which I had planned for preparation around GS mains, subject specific, making notes, current affairs. Now I think we can dive into question answers. Thank you, Madhav. It was superb. Actually, you gave very, very practical tips. And what I really liked was your ABCD approach and your framework for answering. Actually, it is unique because many times we think about the, value addition, but we are short of only telling diagrams, charts, flow chart, maps, etc. But you have made it, and good part is you have for IR you have a different approach and different. So I really like this abbreviation. And what I would request you is to please share your link for all your I do PDFs that. for GS, because you know what you have prepared of your 5 attempts would be immensely useful to all. So please share the link so I can share with all of them. I would now request aspirants to ask their question. This is a great time, great opportunity for all of you. As you can understand, that he is so knowledgeable with his, all the approach. So we already have Radhika to ask the question. Radhika, please unmute yourself and ask the question. Hello, Hello. am I Yes. audible? Yes. Good evening, sir. Sir, actually, I have two questions. First is like the mains are coming, so should we give the synchronized mains exam so that we get an idea how it is going, or we should not? Are you And the giving? second question is, no, sir, no, I am not. I gave the prelims, but I was not able to qualify it. Okay. Okay. Second question. And so second question, you said about answer evolution, like if it takes 2 hours or 3 hours, you should make effort to do it from three different sources, the topper's copy, then your checked answer copy, and third is the model answer. But like it is very time consuming, I think so. And like for how many questions should we do this? That's it, sir. So answering the second question first. I think you should do it for all the four subjects, your optional subject, at least for one or two tests completely. So when you sit down with your first GS1 FLT that you have written, full length test that you have written, you'll see, acha, then you'll realize, acha, my level is this, the topper copy is this, model answer is this. So there is this gap that I have identified. Now I'll list down these pointers. Acha, next time when I'm writing geography answers, I'll ensure that there is a map, because topper is making it, model answer has it, but I am not making it. So this is your learning from that test. Whenever I'm writing a question on, say, economics or something, I am always forgetting the human angle or the human side of that question. So whenever I'm writing next time a, say, economics question, I'll integrate that. This could be very small learnings. Whenever I'm next time I'm writing down a history question, if it is possible to bring in a timeline and draw it of the events which have happened, say one or two events before and one or two events after, I will integrate that in my answers. So these are some points which will help you fetch more and more marks in your successive tests that you write. So if you do it for at least one test of all the subjects, and if you could do it for more than uh, one or two, I think it will be very good. Uh, uh, Paper with this, do you mean you're writing the uh, uh, actual test papers or the some model coaching test papers? Actual test papers. So you'll answer those test papers after one day. This is what you mean? No, sir, like the GS1 is conducted and that will come to us by 5 hours, after 5 hours. So on that day, I'm planning. Okay, next day also that can be possible. Like if I want to give both the exams on the same day. You can do it, but that will depend on your level of preparation जो अभी आपकी है. अगर आपको लग रहा है आपकी प्रेपरेशन अभी है और आपने मेंस फेज में अभी ऐसे ही पढ़ा है जैसे आपका मेंस सपोज इसी बार है, तो आपको डेफिनेटली उसको सिंक्रोनाइज करके दे देना चाहिए. उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा, चीजें समझ में आएंगी.
और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा गैप लेके देख देना चाहिए, तो आप गैप लेके दे सकते हो। आपको लगता है कि यार अभी मेरी प्रेपरेशन पूरी नहीं है, मेरे को इसको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना चाहिए कि क्या थीम्स पे यूपीएससी जा रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट जनरली मैं रेकमेंड करूंगा, आपका जब इवेंचुअल आप जब मेंस लिखो, उस टाइम के पहले आप कोई भी कोचिंग के 4-5 पेपर लेके स्टिमुलेट जरूर करना कि आज मैं ऐसे का पेपर दूंगा 9 से 12, कल मैं पूरा दिन आज GS1 GS2 रिवाइज करके, next day I'll give 9 to 12 GS1, then I'll take a 2 hours break, I'll have my lunch, then I'll write 2 to 5 GS2, I'll take a break, short break, I'll sit to study, revise GS3 GS4, and next day I'll write GS3 and GS4 paper. So I think you should go through this cycle at least once, because only then you'll realize ki what happens after giving 3 papers. So on that third day, after you have written essay GS1 GS2, you come back at your most probably your home or your hotel near your center. It will be around 6:30, and at that moment you'll be so exhausted, and you'll have to revise whole GS3, which comprise of 6 subjects. You have to revise GS4, and you'll have literally 5 hours of time, Yes. and your brain is exhausted. सो इफ यूल गो थ्रू दिस साइकिल, यूल मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली। अच्छा यार, GS3 के नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट क्रिस्प बनाने ही पड़ेंगे, एथिक्स के नोट्स ऐसे बनाने रख पड़ेंगे, या फिर इसके कुछ समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे जो मैं एग्जाम के बीच में रिवाइज कर पाऊँ। GS2 में भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो जब आप इस साइकिल से निकलते हो, और जैसे मैंने पहली बार ये साइकिल दी, तो मुझे पता चला कि यार GS2 पेपर के बाद मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है कि यार अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। अब जब एक्चुअल एग्जाम भी दिया, उस टाइम पे ये चीज हुई, तो लगा नॉर्मल है भाई, पहले भी हुआ था अभी भी हो रहा है, आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट। तो आई थिंक ये साइकिल से निकलना इज बेनिफिशियल। Okay, sir. Thanks, So, Madhav. yeah. Yeah, yes, Radhika, continue. So I have doubt with this continuation to this question only. Like you are saying that we should once go from this cycle, then go for our mains real exam. But like if we go for vision abhyas, so it is conducted just 10 days before the mains proper mains exam, 10 to 20 days just before. And after realizing, like if I've given that cycle and I have realized that my notes are not that good enough that I can revise in those 5 hours, then will not that create a pressure on me? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैसे एक तो आपको जरूरी नहीं है कि एक कोई स्पेसिफिक कोचिंग का ही देना है, जब वो करा रही है तब देना है। अगर आपका प्रेपरेशन हो गया, तो आप कोई भी टेस्ट को खुद का ही आप स्टिमुलेशन बना लीजिए। जरूरी Okay, नहीं है sir. कि वही टेस्ट आपने कोई भी कोचिंग के आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं, उसको आप दो 4 पेपर आप 2 दिन में दे दीजिए, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir, yes. अब टू अस आप उसको कैसे डिजाइन करना है, और बहुत ज्यादा माने ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है कि हर एग्जाम हर मॉक टेस्ट से मतलब गड़बड़ हो जाएगी, या फिर उसमें कुछ लर्निंग ऐसी आएगी जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सब चीज़ मैनेज हो जाती है उस टाइम पे। जब आप मेंस के फेज में होते हो ना, तो ऑलरेडी आप 8x 10x एफिशिएंसी पे आप काम कर रहे होते हो। वो 90 डेज में आप 4-5 गुना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, क्योंकि आप इतने एफिशिएंट हो जाते हो उस टाइम में। तो चीज़ें हैंडल हो Okay, जाती sir. हैं, और देर इज सम वे टू आइडेंटिफाई इट। अब जैसे अभी आप प्रिपेयर्ड हो, तो आप ये साइकिल दिसंबर में ही दे देना एक बार। Okay, sir. Understood. Yes, sir. Thanks, Thank you so much, Radhika. sir. या Now I will request Priyanshi to unmute and please ask her question. Yes, Priyanshi. Priyanshi, please. Priyanshi, you are unmute. Please ask your question. We can't hear you. She's rejoining. So may I ask my question? Yes, Priyanshi, please ask your question. Sir, am I audible? Yes, yes. Oh, I'm sorry. Actually, I was connected with laptop. Sir, firstly, thank you so much for the IR strategy. That is amazing. Agriwala. We always do mistakes over there. And sir, I want to ask for GS2.
कि लक्ष्मीकांत के लिए मेंस में भी आपने अलग से नोट्स बनाए थे या फिर लक्ष्मीकांत ही रिवाइज करके फिर से लिख दिया था, मतलब पेपर, क्योंकि पॉइंटर्स मिस हो जाते हैं in that I was writing today paper. So 7 minutes में we don't write exact words of the Lakshmikant. We write generic points. So वहाँ दिक्कत हो रही है, तो क्या करना चाहिए? अब मेरा आइडिया एक्चुअली रहता था कि मैं प्रॉपर मैं एक बार शेयर भी करता हूँ, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए। आपको मेरे Yes. जीएस 2 के पॉलिटी के नोट्स एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे लक्ष्मीकांत में क्या होता है, इट इज डिजाइंड, मेरे को ऐसा बहुत ज्यादा लगता है कि उसमें एनालिसिस बहुत कम है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बट डिस्पाइट दैट उसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो सपोज यूपीएससी ने पूछ लिया पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएजी, सो वो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में भी होगा क्योंकि बहुत स्टैटिक एरिया है वो। तो उस सेंस में आई थिंक बहुत जरूरी था कि नोट्स में, जैसे मैंने ये डिजाइन करे हैं अपने नोट्स, तो अब इसमें आप देखेंगे जैसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस है। अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस में उसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिक कंटेक्स्ट होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें होंगी, बट मेंस में यूपीएससी कुछ और ही पूछ रहा है लोकल सेल्फ गवर्नेंस से। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जैसे ये पंचायती राज सेक्शन है, तो यूपीएससी अभी ये सब चीजें पूछ रहा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया, has not proved to be effective local self governance. The strength of local institution has shifted from funds, functions and functionaries. ये shift हो गया है. Critically, the legislative, executive and judiciary to control the खाप पंचायत. तो ये कुछ कुछ थीम्स हैं यूपीएससी जो पूछ रहा है अपने टॉपिक में, बट मोस्ट ऑफ द थीम्स ये लक्ष्मीकांत से कवर नहीं होंगी। तो इसके लिए इट्स नेसेसरी कि आप थोड़े सेपरेट नोट्स अपने बना लें। अब जैसे अपन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के सेक्शन पे जाते हैं, तो इसमें जैसे ये पिंक जो सेक्शन है ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं फॉर दिस टॉपिक। तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, आपको मेन सेक्शन पे ले चलता हूँ। अब जैसे ये है, तो अब मैंने पंचायती राज पे 2-3 इंट्रोडक्शन लिख लिए कि अगर मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो भाई गांधी जी का कोट यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 40 यूज कर सकते हैं। फिर व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स अराउंड विच पंचायती राज सिस्टम इज फॉर्म्ड, सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन इन रियल टर्म्स, ये हो गया। फिर पहले स्टेटस क्या था, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो कवर किया है। पॉजिटिव शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर द चैलेंजेस which the पंचायती इंस्टीट्यूशन इज फेसिंग, स्टेट ऑब्जेक्शंस वॉलंटरी कर दिए, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मैच नहीं कर रहा है एडमिन डिसेंट्रलाइजेशन में, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, फिर फाइनेंस में क्या इश्यूज हैं। फिर ये बेस्ट प्रैक्टिस है, केरला में ये हो रहा है, एक किला करके केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में ये हो रहा है। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं यूज कर सकता हूँ, ये वे फॉरवर्ड्स हैं। अब इसमें पंची कमीशन आ गया, सेकेंड एआरसी आ गया, फाइनेंशियल में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव में आ गया, ये खाप पंचायत का जो थीम आया है। तो इससे मेरा पंचायती राज का एक एग्जॉस्टिव प्रेपरेशन हो गया। अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा पंचायती राज में, मैं इस मटेरियल को यूज करके और डिमांड को एड्रेस करते हुए अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। तो ओके सर। इस सेंस में आई थिंक इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जीएस के अपने खुद के नोट्स बना लें। अब इसमें जैसे एक सेक्शन आता है पॉलिटी में कि डिफरेंट बॉडीज, ये सारी बॉडीज यूपीएससी पूछता है या फिर चल रहा है, जैसे सीएजी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पे जब हम नोट्स बना रहे थे तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि जस्ट राइट द पेज नंबर ऑफ लक्ष्मीकांत एंड वी कैन रेफर आवर नोट्स, एंड व्हेन वी आर रीडिंग आवर नोट्स जस्ट ओपन द बुक एंड रीड फ्रॉम देयर। But at that time, we took some more pain and we ensured that we are bringing everything to this document, even if becomes more bulky. But our idea was कि इस डॉक्यूमेंट के बाहर हम कुछ नहीं खोलेंगे। तो अब जैसे अब सीएजी देखेंगे तो सीएजी में भाई 148 आर्टिकल हो गया। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या आर्टिकल्स हैं वो लिख दिए, इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी की बात कर ली, ड्यूटीज, पावर, फंक्शन, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में होंगी सब चीजें, बट हम वापस से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आए, लिमिटेशंस ऐड कर दी, व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड, सक्सेस क्या है। बहुत बार अपन है ना हर बॉडी का सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, बट वो बॉडी इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत सक्सेसफुल चीजें भी कर चुका होगा, तो आपको उसकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। तो उस बॉडी ने क्या भाई बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी लाई थी, यूएन हेडक्वार्टर्स का ऑडिट कर चुका है सीएजी, ये वे फॉरवर्ड है। तो इस तरीके से आप
आपके नोट्स बनते हैं, तो आई थिंक काफी ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा आपके पास एक मसाला रेडी हो जाता है टू आंसर एनी क्वेश्चन। ओके सर, आपने इस नोट्स के भी कोई शॉर्ट नोट्स बनाए थे या फिर आपने इसी को ही रेफर किया है टिल द बनाए एंड? ना, वैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये जैसे ये पिंक वाला मेरा शॉर्ट नोट्स ही है। अच्छा, मेंस के ही शॉर्ट नोट्स है, ओके। नहीं, अब जैसे ये लोकल सेल गवर्नेंस है, अब मेरे को पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना कि यार गांधीयन प्रिंसिपल, बस मैंने शॉर्ट में लिख लिया 73 74th अमेंडमेंट एक्ट, गांधीयन प्रिंसिपल, आर्टिकल 40, 11 12 शेड्यूल, इससे मैं कुछ इंट्रोडक्शन कर दूंगा। नीड सिग्निफिकेंस कोर प्रिंसिपल्स में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कन्वर्जेंस, ट्रांसफॉर्म्स, ये मेरे की वर्ड्स हैं बस। और इसको भी जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया, अब आप इसमें देखेंगे कुछ एरियाज येलो है, ये येलो वो चीजें हैं जो मैं भूल रहा हूँ। ओके तो जब मैं फाइनल रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ येलो येलो सेक्शन देख रहा हूँ कि बाकी चीजें ड्यू टू कांस्टेंट रिवीजन दिमाग में आपके बैठ जाती हैं। अब जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैंने देखा यार इशूज स्टेक होल्डर वाइज लिख सकते हैं कि पीआरआई इटसेल्फ के क्या इश्यूज हैं, एडमिन के क्या इश्यूज हैं, पॉलिटिकल के क्या इश्यूज हैं, करप्शन के क्या इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इश्यूज हैं, फंडिंग के क्या इश्यूज हैं। तो अब यही मेरे 4 5 सब हेडिंग्स हो गए। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने डायरेक्टली लिख सर, लिया है फिर भाई। यही वाले सारे के सारे सब हेडिंग्स बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी आपने फॉलो अप किए हैं? हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया है वो फॉर्मेट मैंने, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे नोट्स। तो आप ये से देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडीज, ये तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आए हैं, आई थिंक 2020 21 तक अपडेटेड होंगे। उसके बाद ये कॉमन पॉइंट्स हम बॉडीज में क्या डाल सकते हैं, फिर जनरली हमने ट्राई किया है उसका सिग्निफिकेंस, आर्टिकल्स, ड्यूटीज, पावर, लिमिटेशन, सक्सेस, सक्सेस हमने जरूर डाला है कि भाई फाइनेंस कमीशन का भी क्या सक्सेस है, क्रिटिसिज्म है, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन में अपन से बुराई बुराई सुनते हैं, बट उसने क्या क्या अच्छी चीजें भी करी हैं वो भी जानना, और उसको एक आर्ग्यूमेंट बनाना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कभी इलेक्शन कैंसिल ही नहीं हुआ, कैंसिल भी हुआ है। अपना वोटर शेयर भी बढ़ा है, वीवीपैट भी लेके आए हैं, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव साइड भी लेते हैं। Very exhaustive notes. थैंक यू सर। They are really going to be very useful for all the aspirants, I'm sure. So, can we take the next one? Anjali, please ask your question. Anjali, Hi, please. am I audible? Yes. Yes. Good evening, everyone, and sir, congratulations. Uh, I wanted to ask regarding prelims, and I'm also having two questions. So, in prelims, like this year, I was not able to qualify, but because I found, although there were many factual issues, but how to manage current affairs, like it felt to me like they were scattered, or I was not able to revise. मतलब क्या strategy होनी चाहिए? प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की Yes, sir. No, rephrase your question. It's not very clear. सर लाइक मतलब करंट अफेयर्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने इस साल के अगर पढ़े भी हैं तो रिवीजन के अलावा भी ऐसा लग रहा है कि उसमें मतलब उससे क्वेश्चंस किस बेस पे आ रहे हैं, आई वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट। आपने करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए? सर लाइक डेली न्यूज़पेपर एंड विजन। विजन के हाँ, एनुअल कंपाइलेशन। हाँ, जैसे जो एनुअल कंपाइलेशन आता है ना पीटी 365, आई थिंक वो पढ़ा होगा आपने। Yeah, मतलब PT मैंने said. हाँ कुछ उससे पढ़ा था और बाकी मंथली मैगजीन्स। अच्छा अच्छा। लाइक फॉर दिस ईयर व्हाट शुड आई रेफर फॉर करंट अफेयर्स? मेरा थोड़ा सा करंट अफेयर्स के प्रति स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं होता था। मैं न्यूज़पेपर अपना डेली पढ़ता था, बट दैट वाज नॉट माय सोर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स, लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। मैं रिलाई करता था जो एनुअल कंपाइलेशन आते थे उस पर। ओके। ठीक है, तो जो पीटी 365 आता था मैंने मंथली ट्राई किया पढ़ने का, बट मेरे से वो शेड्यूल में मेरा इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था वो। तो हाँ सेम। मैं जनरली एनुअल कंपाइलेशन करा, एंड एनुअल कंपाइलेशंस को भी आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना है, चाहे वो मेंस के हों चाहे प्रीलिम्स के हों। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स के पीवाई क्यू 20 25 साल के जो भी पीवाई क्यूज हैं मेन, उनको आप
बैठ के उनकी थीम्स निकालो कि अच्छा आपने क्वेश्चंस देख रहे हो, अच्छा यूपीएससी फंडामेंटल राइट्स में एक क्वेश्चन पूछा 2019 में, फिर आप और सॉल्व करते जा रहे हो, फिर आपने देखा अच्छा यार 17 में भी पूछा है, फिर आपने देखा 11 में भी पूछा है, फिर आपने देखा यार 1990s में भी पूछा है, 95 में भी पूछा है, तो आपने देखा यार फंडामेंटल राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। नाउ अगर आपको इसके अराउंड कुछ करंट अफेयर आता है तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी एक थीम में है, वो करंट में भी कुछ चीज में आ रहा है, तो आई थिंक उस एरिया का करंट अफेयर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और अगेन देन विद इन प्रीलिम्स देर आर सम एरियाज जो करंट सेंट्रिक ज्यादा होते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक, जैसे कि इन्वायरमेंट, इस एरिया से ज्यादा आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे रादर देन कंपेयर टू पॉलिटी जिसमें ज्यादा स्टैटिक एरियाज आएंगे। इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा स्टैटिक एरियाज ही पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसी अप्रोच से करना चाहिए कि आप अगर एनुअल कंपाइलेशन कुछ देख रहे हैं, उसको आप पीवाईक्यू के थीम के लेंस से पढ़िए। पूरा कोई भी बुक को कवर टू कवर मत पढ़िए। कुछ टॉपिक्स 5 स्टार इंपॉर्टेंस के होंगे, कुछ 3 स्टार इंपॉर्टेंस के होंगे, तो उस तरीके से आप उनको देखिए कि यार ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ था, उसको उतने उससे देखिए। And one more, sir, regarding mains test series. So from forum I have taken it, but अगर उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे कि एक क्वेश्चन है उसके बारे में मुझे पता नहीं है या मुझे फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, तो मेरे को मतलब एक बार पहले टेस्ट देख के लिखना चाहिए या फिर नहीं आता तो मतलब मैं उसे ऐसे सबमिट कर दूँ? हाउ इट शुड गो लाइक रिगार्डिंग एवेल्युएशन? नहीं, आपको मतलब हर क्वेश्चन पे आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट होना तो आप इस साल का भी जो मार्क्स की लिस्ट आई होगी ना उसको आप ओपन करना, फिर आप देखना कि हर रैंक में कितने कितने एक एक मार्क्स पे कितने रैंक्स चेंज हो रहे हैं। तो यू हैव टू फाइट फॉर एवरी मार्क। एक मार्क पे 10 रैंक नीचे हो जाओगे, और 10 रैंक नीचे मतलब सर्विस चेंज, कैडर चेंज, बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अपन को हर मार्क के लिए वहां पे फाइट करना है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन है जो पूरे पेपर में अगर सपोज नहीं आ रहा है, तो ठीक है उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो कि यार लास्ट में मेरे पास जो भी 3 मिनट, चार, सपोज वो 10 मार्कर है तो आइडियली उसके लिए 7 मिनट बचने चाहिए, बट उसके लिए यार 2-3 मिनट जो भी बचेंगे उसमें मैं जितना मेरे से बन पाएगा मैं लिख दूंगा। और फिर आप धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लोगे उस चीज में। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ट्विस्टर्स पे, हम्म। लास्ट ईयर मेंस में। अब लास्ट। ट्विस्टर्स, मेरा कोई ज्योग्राफी का ऐसा बैकग्राउंड था नहीं, बट ट्विस्टर्स मैंने सोचा भाई कुछ तो ये साइक्लोन रिलेटेड ही होगा, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइक्लोन का कंटेंट यूज कर रहा हूँ वहाँ पे। बट मैं डायरेक्टली साइक्लोन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टैंड भी नहीं लेना कि यार ये साइक्लोन ही है, क्योंकि अगर मैंने उसको डायरेक्टली साइक्लोन बोल दिया और वो है ही नहीं साइक्लोन तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपने वही की टर्म्स यूज कर रहा हूँ साइक्लोन वाले, की लो प्रेशर सिस्टम है, रिवॉल्व करता है आई के अराउंड, और फिर ऐसे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, डायरेक्शन में मूव करता है। और उन्होंने लिख रखा है कि भाई गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात कर रहे हैं वो, गल्फ ऑफ मेक्सिको में क्यों हाँ। ज्यादा ट्विस्टर्स होते हैं। अब गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में वैसे ही कुछ ज्यादा लिखने को नहीं है, बट अपने को नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का डायग्राम बनाना तो आता है, तो थोड़ा सा बड़ा सा आप डायग्राम बना दो, थोड़ी जगह भी भर जाएगी, और आप कुछ ट्विस्टर्स, कुछ साइक्लोनिक मूवमेंट अंदर जाते हुए दिखा दीजिए। तो आपको कुछ स्मार्ट तरीका लाना पड़ेगा वहां पे कि वो थोड़ा स्पेस भी फिल हो, बट ये सब आप ऐसे हर क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते। लाइक हाँ। फिर दैट्स एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसको पता चलता है कि अच्छा ये मेरे को मतलब चलाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन जनरली हर पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन जैसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ही अप्रोच लेना पड़ेगा, और ये अगर आप अभी से अडेप्ट नहीं करोगे खुद को कि यार मैं इसको टेस्ट को पढ़ के लिख देती हूँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं ना। अभी से ही आपको बनाना है खुद को कि यार अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं इसमें क्या बेस्ट अपना लिख सकती हूँ इन द टाइम अवेलेबल, विदाउट एक्चुअली ब्लफिंग प्रॉपरली, कि मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा ही गड़बड़ कर दिया, बट जितना क्लोज आप उसके लिख सकते हो, कुछ तो डायग्राम बना ही सकते हो, कुछ तो पेज फिल कर सकते हो। Got that, sir. Thanks a lot. Yes. Thank you, Anjali. Now I will request Arya to please ask her question. Arya. Good evening, sir. Good evening. Yes, So Arya. my question is that how did you handle your transition period, that like from coming to CA background, then switching to IPS and then IAS? Like what were the ups and downs, and how did you handle those conditions in your way? Uh,
जैसे आई completed my CA and then only I started my UPSC preparations. तो मेरे लिए थोड़ा सा एक शॉक भी था UPSC preparation because CA is very technical when you're preparing it. So एक चीज को आप बहुत डेप्थ में जाके देखते हो. सो टैक्सेशन का इन आउट आप देख लोगे, ऑडिट का इन आउट, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, अब सोसाइटी का मुझे अता पता ही नहीं क्या चल रहा है. हिस्ट्री का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा लिंकेज है, सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आके एक शॉक जरूर लगा था. तो उस सेंस में आई थिंक मेरा फ्रेंड है रत्नेश अग्रवाल, ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग विद मी, जिसके साथ ही मैंने नोट्स बनाए थे. तो आई थिंक वो मेंस लिख चुके थे, तो उस टाइम उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक गाइड कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, लेट्स मेक आवर ओन नोट्स. तो उस वे में हम आगे बढ़े एंड धीरे धीरे इस एग्जाम से सीखे. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स रह गया था 0.6 मार्क्स से. नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई रोट मेंस, वो 1 नंबर से रह गया. थर्ड अटेम्प्ट में आई गेव एन इंटरव्यू, उसमें मैं 11 मार्क्स से लिस्ट में बाहर था. तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद आई वाज लाइक यार अब मुझे नहीं देना एग्जाम. आई थिंक आई हैव डन व्हाट आई कुड डू मेजरली, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा था, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर अब लगा यार अब हो ही नहीं रहा ये एग्जाम. सो आई वाज डिसाइडिंग कि यार अब नहीं देना चाहिए. बट एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि यार उस टाइम पे प्रीलिम्स, इंटरव्यू फेलियर और प्रीलिम्स की डेट में बहुत कम टाइम होता था, बिकॉज कोविड की वजह से सब मंथ्स आगे शिफ्ट हो गए थे. तो मतलब मैं ट्यूसडे को फेल हुआ और नेक्स्ट संडे वॉज प्रीलिम्स. तो मैंने एक मेरे फ्रेंड से भी पूछा था, ही इज IAS इन आसाम. तो भाई उसके साथ भी ऐसा हुआ था. उसने बोला भाई रोने का भी टाइम नहीं होता उस टाइम पे, कि यू डोंट इवन हैव टाइम टू क्राई प्रॉपरली, कि यू जस्ट हैव टू पिक अप बुक्स अगेन एंड गिव द एग्जाम. तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम, यू हैव 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट, व्हाट विल यू डू विद दीज अटेम्प्ट्स? So just give the prelims exam. If you think you'll clear and if you want to give, then decide whether you want to give the attempt or not. So I just read for 2-3 days, which was time available, and I then gave the prelims. Prelims was very difficult, but because of the cumulative knowledge that was accumulated for the 3 attempts, I think I could clear prelims. And then once I could clear the prelims, I thought, yeah, let's give one more mains and take one try. So in that attempt, I became IPS. पोस्ट IPS इट वाज अ फीलिंग कि यार एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर अपना बेस्ट शॉट अपन दे सकते हैं. क्योंकि उस टाइम थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में क्या हुआ था, मेरे मेंस के मार्क्स उल्टा गिर गए थे, जबकि मैंने मेहनत ज्यादा करी थी. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अभी मेंस का मेरा सेक्शन अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हुआ है. मेरे इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से मैं को अच्छी रैंक आ गई थी. तो फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया. फिर आई वॉज वेरी डिटैच्ड इन दिस अटेम्प्ट कि यार हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया सर्विस है, आई एम वेरी हैप्पी. इसलिए मैंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लिया था इन दिसंबर इन द पुलिस अकेडमी. आई वॉज देयर फॉर 6 मंथ्स. तो उस बीच में फिर रिजल्ट्स आया. एक जो और पर्टिकुलर हैबिट थी मेडिटेशन की, आई थिंक मुझे काफ़ी हेल्प करी. मैं आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन से जुड़ा हुआ था. एंड थोड़ा सा मेरी एंजाइटी और सेल्फ डाउट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प किया मेडिटेशन. सो आई थिंक ये धीरे धीरे ट्रांजिशन रहा है ऑफ माय होल जर्नी. Okay, thank you so We have another. Yeah, please continue. आई होप आई We have Revati Kakani. Please ask your question. Revati, unmute yourself. Yeah. Yes, good evening, sir. Actually, my doubt is regarding optional. My optional is commerce and accountancy, but I am unable to manage optional with GS. So, वो You are not कैसे very clear. Please be loud. sir, Revati. my doubt is yes, sir. Yeah. So, am I audible now? Yes. यस. Yes, sir. Sir, my doubt is regarding optional. ऑप्शनल और जीएस को साथ में कैसे मैनेज करें, या फिर पहले ऑप्शनल खत्म करके फिर जीएस स्टार्ट करें, या फिर ऑप्शनल के भी शॉर्ट नोट्स बना के रखे. तो वो उसके बारे में थोड़ा पूछना था सर. What is your optional, Revati? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. You are lucky because Madhav also have the same one. Yeah. Yes, Madhav, please. सर आई थिंक रेवती व्हाट यू कैन डू इज, मतलब आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो कि
कॉमर्स को मैं जब जैसे मैं सीए का बैकग्राउंड था मेरा, तो जब मैं जीएस से थोड़ा बोर हो जाता था तब मैं कॉमर्स पढ़ लेता था। तो इट वाज माय वे ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम मंडेन जनरल स्टडीज का प्रेपरेशन। सो थोड़ा मैं मिक्स मैच रखता था कि आज थोड़ा टाइम जीएस पढ़ लिया, थोड़ा टाइम ऑप्शनल कर लिया, कुछ टाइम मैं ऑप्शनल को ज़्यादा हैवी देता था। इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू योर एफिशिएंसी, आप उसको किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। कि आपको बेटर लगता है कि यार मैं एक हफ्ता ऑप्शनल पढ़ लूँ, उसको अच्छे से कर लूँ, फिर ब्रेक लेके फिर जीएस पे फोकस करूँ, तो यू कैन डू इट दैट वे। बस आपको माइंडफुल ये रहना चाहिए कि आप अगर आज प्रिपेयर कर रहे हो, नेक्स्ट प्रीलिम्स आप दे रहे हो, तो आप एक रिवर्स अपना टाइम टेबल बनाओ कि अच्छा यार मेरे पास प्रीलिम्स देना है मुझे से 25 मई को, वट एवर इज द डेट, और आज से लेके वहां तक के मेरे पास से 300 डेज है। अब 300 डेज में मुझे से 100 डेज मुझे प्रीलिम्स प्रिपरेशन में चाहिए, अब बचे 200 डेज। 200 डेज में रफली 7 मंथ्स हो गए। तो आप इसको ब्रेकअप आप बनाइए अपना कि यार 7 मंथ्स में हर महीने में एटलीस्ट 2 दिन तो यू नीड फॉर कंटिजेंसीज, बफर डेज, कि मैं बीमार हो सकता हूँ, मुझे कुछ इमरजेंसी आ सकती है, तो आप दो दो दिन हटाइए, यू रिमूव दोज डेज। वरना अगर आप उनको भी प्लान कर लेंगे तो आप हमेशा ही ऑफ टारगेट चलेंगे। तो आप उन बफर डेज को हटाइए, फिर आपने 15 डेज उसके हटा दिए। फिर आपने देखा यार मुझे आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट देना है, कम से कम मुझे 10 टेस्ट लिखने हैं, तो 10 टेस्ट लिखने के लिए सपोज आपने खुद को 15 दिन दे दिए, तो यार चलो 15 दिन ये माइनस हो गए। अब मेरे को जीएस भी पढ़ना है इतने दिनों में, ऑप्शन भी पढ़ना है। अब जीएस को मेरे को पढ़ने में सपोज आपके पास दिन बच रहे हैं, इसको सब माइनस करके से 150 डेज बच रहे हैं। तो अब मेरे को ऑप्शनल प्रिपेयर करने में से पेपर 1 में 30 डेज लगेंगे, पेपर 2 में 35 डेज लगेंगे, तो आप उसको लेस कर दीजिए, फिर बचे कुछ जीएस के दिन हो गया। अब आपका ये पूरा फ्रेमवर्क हो गया, एक मैक्रो प्लान है आपका फ्रॉम टुडे टिल द प्रीलिम्स का डेट। ओके, अब नाउ इट्स अप टू यू, नाउ इट्स डे 1। आपके जी ऑप्शनल की किटी में 50 डेज है, ठीक है। आज मैं आधा दिन पढ़ूंगा तो उसमें से आधा दिन माइनस हो जाएगा, आज उसमें से अब 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़ूंगा तो उससे 3 दिन माइनस हो जाएगा। तो अपने को ये ट्राई करना है कि अपन इस ओवरऑल टाइम फ्रेम को फॉलो करें। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप आज मैं ऑप्शनल 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 पढ़ रहा हूँ, तो इतना ज्यादा ऑप्शनल पढ़ लिया, इतना डिटेल में पढ़ लिया कि एक दो सब्जेक्ट जीएस के रह गए, तो वो यूजफुल नहीं है। प्रेपरेशन आपकी लेयर्स में होती है, जैसे एक लेयर आप पढ़ोगे पूरे ऑप्शन की, एक पूरा बेसिक आपको आ जाएगा, फिर आप सेकंड लेयर पढ़ोगे, अच्छा यार पीवाईक्यू के मैंने सोल्यूशन बना दिए, फिर आप पढ़ोगे अच्छा यार इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वैल्यू एडिशन बन गए। इस तरीके से आपकी लेयर्स में प्रेपरेशन होगी। तो उन लेयर्स को चलते रहिए, हर बकेट को थोड़ा 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 बढ़ते जाइए, रादर देन टेकिंग योर प्रेपरेशन फ्रॉम एंड टू एंड। क्योंकि ऑप्शनल में, हर ऑप्शनल में क्या होता है, कभी खत्म नहीं होगा वो, कितने भी अटेम्प्ट्स आप कर लो, आपको हमेशा लगेगा कि यार इसमें स्कोप है। क्योंकि 2 एरियाज ऑल्सो जहाँ पे अभी भी कंटिन्यूसली रिसर्च हो रही है, अभी भी कंटिन्यूसली लोग प्रोफेशनल हैं जो उसमें वर्क कर रहे हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। बट आपको कोई भी ऑप्शन पढ़ने का बेस्ट तरीका है, आप पीवाईक्यूज उठाइए, 70-80% पेपर वहीं से आएगा, एंड आप अगर उसको कवर करते हुए जा रहे हैं तो आई थिंक वो बढ़िया हो जाएगा। यस सर। सर एक्चुअली कर ऐसे ही रही हूँ पीवाईक्यूज करके, पर वो सेल्फ डाउट आ जा रहा था कि ये शायद खत्म नहीं हो रहा है, ये शायद आएगा नहीं, शायद प्रैक्टिस कम पड़ रही है, तो ऑप्शनल बहुत ज्यादा हो जा रहा था और जीएस हो ही नहीं रहा था। वो थोड़ा सा आप टाइम फ्रेम को देख के चलिए कि यार मेरे को ऑप्शन को 30 दिन देना है तो 30 दिन ही देना है, उस लेवल तक ही उसको लाके फिर छोड़ना है। Yes, Revati, you have to plan your schedule properly and divide the time. यस सर, यस। थैंक यू सो मच सर, समझ गया, थैंक यू सो मच। So these questions are over. Now we have some questions in the chat box. We'll take few one. One is from Radhika Chandak. Sir, in IR, can we make notes based on ABCDEFG model of important country? Which I think you have already answered that this should be the model for important countries. Is it? Yeah, sir, and my notes also, which I'll share for IR, they covered 4-5 dimensions. Introduction with that country, significance of that country for India. Then one was what are the measures of cooperation that are going on with that country. Mm. Next is conflict and challenges. Every relation has some conflicts. Then what are the solution and conclusion. So this was my main framework. And within that you can use your ABCD कि अच्छा एग्रीकल्चर में कुछ कोऑपरेशन हो रहा है क्या, एग्रीकल्चर में कुछ चैलेंज है क्या, एग्रीकल्चर में कुछ सिग्निफिकेंस है क्या, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो नोट्स आप एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा।
Radhika is asking, sir, can we use your notes for preparation and final short notes from it with current updates or make our own notes? आप मेरे नोट्स को रेफरेंस की तरह तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आपके खुद के ऑलरेडी नोट्स हैं तो इस नोट्स को आप क्विकली एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, जैसे आप नॉवल पढ़ते हैं। तो आपको लगेगा कि यार अच्छा ये अच्छे पॉइंट्स है, इसको आप अपने नोट्स में ले जाइए और मेरे नोट्स को साइड कर दीजिए। और अगर आपने कुछ एरिया ऐसा है जिसके आपने नोट्स बनाए ही नहीं है तो आप इससे स्टार्ट कर लीजिए, आप इसको बेस बना लीजिए और फिर इसमें करंट अफेयर्स इंटीग्रेट कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में मेरे इतना फोकस मत करिए क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरी मेमोरी के हैं, जो मैं भूलता हूँ, जो मेरे को चीजें याद नहीं रही। तो शॉर्ट नोट्स तो बेटर है आप खुद के ही बनाए, बाकी बेस नोट्स आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। There is another GS4, and even if I do them, then I'm unable to generate points, revise 2 times, still no improvement. Please suggest how can I improve? This is about GS4 codes, how to decipher codes. कोड्स में जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे को कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हो। जब आप ऐसे टॉपिक को आप लिख रहे हो, कोई वो एक तरीके का मिनी ऐसे ही है कोड्स का क्वेश्चन। तो ऐसे का आप टॉपिक लिख रहे हो, आप डिफरेंट डायमेंशन से सोचने की कोशिश करोगे, डिफरेंट पेस्टल लगाओगे, ये लगाओगे, तो डिफरेंट डायमेंशन से अपने को ब्रेनस्टॉर्म करते हुए उसको लिखना है। और जैसे कोड से क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट आप ट्राई करो कि वो कोड को मैं कैसे सिलेबस से लिंक कर दूं। यूपीएस इसमें एथिक्स में ये गड़बड़ होती है कि अपन उस क्वेश्चन को सिलेबस से लिंक नहीं कर पाते कि ये कौन से सिलेबस से आया है। देखो जैसे अपन ने सिलेबस वाइज नोट्स बना लिए कि यार मेरे पास प्रोबिटी इन गवर्नेंस के ये नोट्स हैं, करप्शन के ये नोट्स हैं, बट ये कोर्ट को मैं एक बार बस क्या इसको करप्शन से लिंक कर सकता हूँ क्या? हाँ यार कर सकता हूँ। तो मेरा कोई करप्शन के नोट्स का कुछ पॉइंट्स है जो मैं इसमें लेके आ सकता हूँ। दैट इज हाउ जो आपके नोट्स बने हुए हैं आप उसको उसमें लेके आ पाओगे। बट सेकंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो आप मार्केट से GS4 के पास के क्वेश्चन उठा लो, जो दूसरे कोचिंग के हैं, आप कोर्ट्स वाले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो आई थिंक उससे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर उसके मॉडल आंसर पढ़ो, अच्छा यार ये एंगल तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, ये एंगल मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टाइम कोर्ट से क्वेश्चन करूंगा तो ये एंगल जरूर लाऊंगा। आई थिंक Thanks, दिस। Madhav. I think you explained the thing so well. It was so good. There are few questions about the commerce optional. My request is we had kept the session today on GS. We'll have a separate session on commerce, maybe from Madhav when he joins the academy and he has time for that. We'll have a separate session because it is not possible to have optional as well as GS in the same session. It was a long session, and Madhav, it was really, really superb. You explained the thing so well. थैंक यू। Shweta ji, are you here? Shweta ji, are you here? No, I think she is, something has happened. So, Madhav, thank you very much. I think session was superb. All the people and all the aspirants who joined must have liked it, must have benefited it from this. Excellent. I must say it was wonderful and amazing. And थैंक यू really look forward to your future session on optional commerce later when you settle in an academy. Please do share your all the GS notes as well as commerce notes so I can share with the aspirants. So thank you very much. Excellent सर, session. Yes, shared yes, link yes, Madhav. on this chat only. I'll share it with you also personally. And sir, for Right, also sir, I've recorded these 3 videos with different classes: DKT, rankers, and DADME. So right. if there are specific issues with respect to commerce, if the aspirants can go through these videos, major things I have covered for my Oh, preparation. wonderful. So you can share me the link of these three so I I can share with them. Yeah. sure, I'll do that. Thank you, Madhav. Excellent. Thank you so much for devoting. So this was one of the longest session we had and very, very wonderful session. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you. Yeah, best wishes to everyone. Bye. Thank you. Thank you so much. We'll end the session. Hai na?